सादर प्रणाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाली इस एनसीईआरटी की वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न के 17वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मैं गगन गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में न्यू दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग एनसीईआरटी के स्टूडियोज़ में हैं और हमारे साथ आज डॉक्टर रोहित कुमार शर्मा, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रसायन विभाग में प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। आज का दिन दोस्तों हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इस नज़र से है कि आज 10 दिसंबर है और ये 10 दिसंबर बड़ा खास दिन है विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, खास तौर से क्योंकि आज ही के दिन नोबेल पुरस्कारों का वितरण होता है। इस वर्ष और पिछले वर्ष भी 2020 में भी इन पुरस्कार वितरण समारोह स्टॉकहोम में नहीं हो पाए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, और उम्मीद है कि 2022 में फिर से होंगे। आज इस समारोह को ऑनलाइन मोड या वर्चुअल मोड से आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे साथ, आपको तो याद होगा, 26 नवंबर को हमने एक शो किया था, एक सेशन किया था, नोबेल पुरस्कार एक संस्थान, द इंस्टीट्यूशन ऑफ नोबेल प्राइजेस। आज उसी कड़ी में हमारे साथ रोहित शर्मा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री के 2021 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के विषय पर हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ये 2021 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में कैटालिस के ऊपर है, कैटालिस को ध्यान में दिलाता है। और आज रोहित जी हमें बताएंगे कि किस तरह से कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शंस में कार्य करते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की व्याख्या करेंगे। वी विल एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड देन हाउ these organic catalysts can be used to frame or to prepare the future molecules and its applications in different aspects of our general life. So साथियों, आज मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनीता फरकिया, जो कि विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एट एनसीईआरटी की अध्यक्षा हैं, विभागाध्यक्षा हैं, वो जुड़ी हैं। साथ में ही हमारे साथ कुछ और दर्शक हैं स्टूडियो में। और आप इस कार्यक्रम में जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हो, आप हमारे YouTube एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल पर इसको देख रहे हैं, आप उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ साथ आप हमारे ईमेल एड्रेसेस, जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, उन पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम PM ई विद्या चैनल्स 9, 10, 11, 12 इन 4 चैनलों पर लाइव प्रसारित हो रहा है। साथ साथ ये विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, टाटा स्काई, डैन, डीडी फ्री डिश, एयरटेल के प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रसारित हो रहा है। अब मैं डॉक्टर सुनीता फरकिया से निवेदन करता हूं कि वो डॉक्टर रोहित शर्मा का स्वागत करें और उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। डॉक्टर सुनीता फरकिया, प्लीज। Thanks, Gagan ji. Good morning and warm welcome. Viewers, today we have Dr. Rohit Kumar Sharma with us. I am feeling great pleasure to introduce Dr. Rohit Kumar Sharma, who is from the Panjab University, Chandigarh. Dr. Rohit Kumar Sharma, he is Dr. Rohit Kumar Sharma, Department of Chemistry, Center for Advanced Studies in Chemistry at Panjab University, Chandigarh, obtained his Ph.D. from Department of Medical Chemistry, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, NIPER, Mohali in 2009. He pursued his post-doctoral studies at Nanyang Technological University, Singapore. He joined Panjab University in 2012. He is a selected fellow of Indian National Young Academy of Sciences for 2018 to 2022. He has already got 2 patents in his name and 5 more are in line. He has also published more than 40 research papers in various peer reviewed journals
In 2015, Dr. Sharma has also authored a book on antimicrobial peptides published by Lambert Academic Publishing. Dr. Sharma has also completed 3 research projects awarded by the University Grant Commissions, Science and Engineering Research Board, Department of Science and Technology, and Department of Biotechnology, Government of India. Dr. Sharma is now advising 2 postdoctoral fellows and supervising 5 doctoral theses in addition to 8 doctoral theses and several master's level dissertations that Dr. Rohit has already supervised. Welcome Dr. Rohit to this platform in our studio. Now it's yours. The platform is yours, sir. So here we have Dr. Rohit, who is the INYAS fellow, very prestigious fellowship of Government of India. So Dr. Rohit, it's all yours, please. Yeah, thank you very much, sir, and thank you, ma'am, for very nice words. And for the sake of students, so I shall be presenting today the work which has led to the Nobel Prize in Chemistry 2021, that is for the development of asymmetric organocatalysis. So मैं दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी साथ साथ बोलूँगा ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहे. और जैसे मैंने बोला कि दिस वुड बी, ये मैं काम को बिल्ट अप करूंगा इस तरह से कि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से ये नोबेल प्राइज जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में ये प्राइज मिला है. सो द टाइटल ऑफ माय टॉक इज अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनोकैटालिसिस और ऑर्गेनोकैटालिस्ट, दैट इज एनविजनिंग फ्यूचर मॉलिक्यूल्स. तो हम कैसे फ्यूचर के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. सो द कंटेंट ऑफ माय टॉक is divided into 3 parts. Basically, first part I will be discussing about catalysis. I will be telling you about catalysts, the action of catalysts, applications, and how the catalyst can be classified. And then I will be switching to the second part, which will talk about the asymmetry or the chirality. That what is this asymmetry in the molecules or chiral concept, and we will try to understand stereoisomerism, chirality, enantiomerism, diastereomerism, and importance of enantiomerism, particularly in pharmaceutical industry, which has led to this Nobel Prize. And then we will also understand asymmetric synthesis. And then the third part, which will lead to the specific development of asymmetric organocatalysis, which has led to the delivery of Nobel Prize in Chemistry 2021. And I will finally be talking about what are the future advancements in this field and probably the coming Nobel Prize in future. And the aim of this presentation is to make students understand and inspire them towards the science which can lead to Nobel Prize winning achievements. So through the content of this slide, I will be discussing about how simple ideas can be generated and they can be finally conceived to be a major discoveries in the future. So discussing the first part, that is the catalysis. So everyone knows that catalysis is an action by a catalyst which takes part in a chemical process and can alter the rate of the reaction, and yet itself will return to its original form without being consumed or destroyed at the end of the reaction. So basically एक ऐसा substance जो कि खुद यूज नहीं होता है लेकिन वो रिएक्शन को बहुत ही बेहतर ढंग से करने में सहायक होता है, उसे हम कैटालिसिस कहते हैं. एंड कैटालिसिस will change itself during the process by interacting with other reactants and product molecules, can change, and it alters the rate of the reaction. In most cases, the rate of the reactions are increased by the action of catalysts, and however, in some situations, the rates of the undesired reactions are selectively suppressed. So catalyst एक ऐसा substance है जो कि rate of the reaction को improve करता है, चाहे वो rate को directly improve करे, चाहे वो undesired reactions को कम करके improve करे. And finally, as we have discussed, ये अपनी original form में वापस आता है. After reaction cycles, a catalyst with exactly the same nature is reborn. So that means the catalyst actually gets involved in the reaction, and it is finally remains the same as it was in the initial process.
and in practice a catalyst has its lifespan and it usually deactivates over the time. ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के दौरान ये खराब नहीं होता, लेकिन विद टाइम इसका एक्शन जो है वो कम होना शुरू हो सकता है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने में. Apart from other things, catalyst action leads to the rate of the reaction to change, as we have discussed. This is realized by changing the course of the reaction. Compared to non-catalytic reaction, the energy of the activation decreases drastically. That means whatever energy was required for a normal reaction, now the activation energy is much lesser when the catalyst is used. And the intermediate forms are different from those formed in a non-catalytic reactions, जो कि हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे कि कैसे वो intermediates different होते हैं. And the reaction proceeds under much less demanding conditions. So you have actually made the reaction condition much simpler. The catalyst has made the reaction conditions much simpler and allow the reaction to occur at much milder conditions. So for example, lowering the temperature for heat sensitive material. So there are different type of reaction, and this particular diagram here shows that when the uncatalytic reaction is there, the energy barrier is much higher, but when the catalytic reaction is there, the energy barrier goes down, although different intermediates can form. So let us try to understand a catalyst from the perspective of the activation energy and the rate constants. So you can see on the left side there is an uncatalyzed reaction where the energy of activation is much higher, but when you use a catalyst, the energy of activation goes down. So that means catalyst is actually lowering the path of the energy, and it is allowing the energy, it is allowing the reactant to reach that energy state much faster than a non-catalytic reaction. And as you can see, the energy of activation is much lower in a catalyzed reaction. Secondly, the rate constant is much higher in the catalyst reaction, whereas the free energy change, that is the change from the reactant to the product energy, remains same. That doesn't change. So that means reactant and product energy remain same. It is the intermediate stage where the energy goes down when we use a catalyst. So that means catalyst is an amazing molecule, and it can be used for making different type of reactions much simpler. So for example, if you see this simple reaction where a ketone can be converted into an enol, here you can see that once this ketone is converted to enol, it should lead to this type of intermediate in between. If you are not using any catalyst, it should lead to this type of intermediate. But the energy required for this type of intermediate is much higher when you don't use a catalyst. On the other hand, there are two ways to do this reaction by using a catalyst. If you use a base catalyzed enol formation, then the base will abstract the proton and it will lead to this type of enolate. So once this enolate is formed, the energy of activation is much lower, and the intermediate form, that is the enolate, will have a stabilized form. तो कहने का मतलब ये है कि आप catalysis, इस केस में catalyze एक base use करके energy activation को बहुत कम कर सकते हैं, और intermediate जो बनता है वो काफी stable है, और compared to non-catalyzed reaction, ये reaction जो है easily हो जाता है और कम समय में हो जाता है. So that means base use हुआ, लेकिन ultimately base वापस से regenerate हो गया और आपके पास enol formation हो गई, और जो बेस है वो एक तरह से कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, उसने एनर्जी एक्टिवेशन कम कर दी. दैट मींस इट्स अ वंडर मॉलिक्यूल. सिमिलरली द सेम रिएक्शन कैन बी यूज्ड यूजिंग एसिड. एसिड यूज करके भी हम इनोल फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम कीटोन. इस केस में इनोल जब आप एसिड यूज करेंगे तो प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग के इस तरह का कार्बोकेटायन बनाएगा, और वो भी एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर सकता है. इस केस में भी एनर्जी जो है कम हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं. दे कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स कैन अल्टीमेटली लीड टू द लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन, विच विल फास्टन द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड अल्टीमेटली जो कि बहुत ही मुश्किल रिएक्शंस थे, जो कि बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में होते थे, उनको आप सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपलर कंडीशंस में कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन बाय एक्सप्लेनिंग एन एग्जांपल, अ टिपिकल कीटो इनोल फॉर्मेशन एग्जांपल जो मैंने समझाने की कोशिश की है. अपार्ट सो इनके एप्लीकेशंस, देयर आर अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ कैटालिसिस. लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. Almost all chemical industries have one or more steps employing catalyst. For example, petroleum industry, energy sector, fertilizer sector, pharmaceutical sectors, fine chemicals, all of them use different catalytic catalysts and catalysis processes.
The advantages are amazing. They achieve better process economics and productivity, which is the need of the hour, increase the rate of the reaction, simplify the reaction steps, carry out the reaction under milder conditions, reduce the waste, improve selectivity towards desired products, replacing harmful and toxic materials with readily available ones. So these are all listed applications or advantages of catalysis which help in making the industrial process much simpler. Apart from this, they also produce certain products that may not be possible without catalysis, and they have better control of processes, and they encourage application and advancement of new technologies and materials. This we will try to understand towards the last part of our presentation by taking some specific examples. There are amazing environmental applications when you use catalysis. You can reduce pollution because you are now using the reaction conditions under much milder way rather than drastic conditions, and then pre-treatment can be done. Post-treatment can also be done by using catalysis. You can use alternative materials. Pollution reduction, you can actually convert harmful gases to non-harmful gases by using catalysis, and liquid pollution can also be removed, and similarly solid pollution can also be removed by using catalysis. And apart from this, there are other applications where catalysts play a very key role in new technology development, and we will be seeing this through the course of this presentation. So if we understand that what this is catalyst in generalized, now the next thing comes that what are the different types of catalysis, how you can divide catalysis. So there are two ways. One is that the form of catalysis. There are basically two types of catalysis in the terms of which form they are actually being used. One form is the heterogeneous form, where a catalysis in a different form, whether the catalysis might be a solid, but the reactant or the liquid might be reactants might be in liquid or gaseous state. So that means heterogeneous catalysis is the one where the form of the catalyst is different from the reactant or the product, whereas the second type of catalysis is the homogeneous catalysis, where both catalysis and the reactants are in the same phase, solid solid, liquid liquid, or gaseous gaseous. So depending upon that, we can distinguish between. But the more advanced type of types of catalysis that we use nowadays are these three different types of catalysis. The first one is biocatalysis, that is the enzymes or the nature catalysis that we talk about. The second one which man has produced is the metal catalysis. We will be discussing about these three in detail in coming slides. And the third one, which is the recent technology and for which the Nobel Prize was given this year, is the organocatalysis. So let us try to understand these three different type of catalysis in a broader way. But the most important point is that all these three types of catalysis are used for different applications, ranging from energy processing, bulk chemicals, fine chemicals, food processing, environment. मतलब ये है कि ये तीन different तरह के catalysis, जो कि nature का catalyst है enzyme, metal catalysis जिसमें metal को use किया जाता है, और organocatalysis जिसमें organic compounds को use किया जाता है, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था 2021 का. ये तीनों के तीनों जो हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं रिएक्शन को इजी करने में, और इनकी एप्लीकेशंस जो हैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर बहुत ही इमेंस एप्लीकेशंस हैं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एंड देन वी विल ट्राई टू सी व्हाई ऑर्गेनोकैटालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट. तो उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा इसका डिवीजन का, वी कैन अंडरस्टैंड द डिवीजन between homogeneous and heterogeneous catalysis. That homogeneous catalysis has advantage because this is a single phase. Both the reactants and the catalysis are in the single phase. It requires low temperature. It increases the rates to a tremendous form. It has high selectivity. Milder conditions are being used for doing homogeneous catalysis, but there are some disadvantages also. For example, separations are difficult, and they are difficult to recover because again the phase is same, both reactant and the catalyst is in the same phase, so it is difficult to differentiate between the two, and they are expensive also compared to the heterogeneous catalysis. On the other hand, heterogeneous catalysis have some advantages. They are multi-phase, so you can actually have different phase reactions. And then high temperatures can be used, क्योंकि आप दोनों different phases में कर रहे हैं, catalyst different है, reactant different है, तो temperature जो आप बढ़ा सकते हैं. But
because the phase is different, the design and optimization becomes difficult. And एक important advantage ये है क्योंकि phase different है तो separate out करना ज़्यादा easy हो जाता है heterogeneous catalysis को, जो कि इसीलिए readily recycle और regenerate भी किए जा सकते हैं, and they have a long life as compared to homogeneous catalysis, and they are cheaper also because they come in different forms, they can be easily purified and they can be used directly also. But there are some disadvantages of heterogeneous catalysis. For example, they have low selectivity and they require high energy processes, and their mechanistic understanding is poor because again the phases are different. So these are the advantages and disadvantages of heterogeneous and homogeneous catalysis. Now the next thing is to understand those three different types of catalysis. That is the first one, which is the nature's catalyst, which is called as biocatalysis or enzymes. And for example, there are very commonly known enzymes. For example, this triose phosphate isomerase, also called as TIM. This is the enzyme which catalyzes reversible interconversion of dihydroxoacetophenone and glyceryl 3-phosphate. एक साइकिल है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिससे कि हम ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये एंजाइम यूज होता है। तो ये एक नेचर का कैटलिस्ट है। सिमिलरली साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये भी एक नेचर का कैटलिस्ट है। दिस कैटलिस्ट इज फाउंड इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन बैक्टीरिया एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स इन द मेम्ब्रेन। सो ये हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सेल्स के अंदर। सो दैट मीन्स कि ये कैटलिस्ट कोई मैन मेड फिनोमिना नहीं है। दिस हैज कम फ्रॉम द नेचर। नेचर हैज मेड एंजाइम्स इन द living systems which can be used to smoothen the reactions, which can be used to make the reactions feasible. Now the man is mimicking these enzymes, and we are coming up with new type of catalysis which we will discuss in the later slides. So these enzymes are actually highly tailored active sites, and they often contain some metal atoms also in our body, and these are gold standards of catalysts. So the catalysis actually started from enzymes, and these enzymes are highly specific, they are highly selective, they are very efficient, and they catalyzes very different reactions. And even in nature, outside the body also, you can convert nitrogen to ammonia using catalysis. You can convert carbon dioxide and water to glucose using catalysis. And these enzymes specifically work in living cells, and they are much efficient and better than any man-made cells. But it is very difficult to synthesize them and isolate them. So that's why man has made smaller catalysts. And the first one, the most important one in this category, is the metal catalysis, or we also call them as inorganic catalysis. These are the compounds which contain metal carbon bonds. इसके अंदर metal और carbon bonds होते हैं. Metal plays a very important role, क्योंकि metal के surface के ऊपर reaction होता है और उसकी वजह से जो reactant है वो product में convert हो जाता है. And there are both sigma and pi systems which are there. Pi bond भी होता है, sigma bond भी होता है, and bonding exists between metal atom and the carbon atom. And these are some typical metal complexes which are used these days. These are very complex metal catalysis. For example, these are all ruthenium catalysis. The names are also given there, and these are being used for different processes for converting the reactants into products in a much milder ways. So perhaps this is the closest to what nature has produced. These are very close to what enzymes are there in the nature. And the 2005 Nobel Prize in Chemistry, which was given for metathesis. The metathesis name also comes from metal catalysis. Actually, we'll discuss about that in our when we discuss the Nobel Prizes in chemistry. So this was given for the metal catalysis discovery, and they are very well defined metal-based active sites. They are selective, efficient manipulation of organic functional group can be done using metal catalysis, and there are different forms of metal catalysis which are there, and especially they are used for polymerization reactions. But the one disadvantage is this: they are difficult to generalize. They are very specific. They can be used only for specific reactions. So that is one disadvantage that is there for the metal catalysis. So the next category, which is the latest category nowadays, and
for which the Nobel Prize this year was given is the organocatalysis. These are the usage of very small organic molecules to catalyze asymmetric transformations. So students, if you don't understand asymmetric transformation right now, don't worry, I will explain it in my coming slides. Just understand that they are used to make different reactions, which is called as asymmetric reactions. The first example of this was actually used when in 1971, when proline catalyst was used. When proline, which is an amino acid, only amino acid with cyclic side chain, was used by 2 industrial research groups. So that was the first report of it, but they didn't carry it forward, and it was not until 1999 when the major advancements came. So the major advantages of organocatalysis is that they are non-toxic because they are organic, and of course if they are non-toxic, they are environmental friendly, and there is no metal involved. That means their cost is also very low, because metal generally increases the cost. And then they are robust. They can be used for different type of reaction. They can be generalized, unlike metal catalysis. And then of course you are not using metal, which actually can cause a lot of problems, environmental problems, because the metals generally don't degrade that easily. So these are some typical very simple organocatalysis. For example, if you look on this is the proline one, for which this year's half Nobel Prize is being given. I'll discuss it later. And then simple phosphoric acid, thiourea based, alkaloid based, imidazolone based, carbene based, all these catalyses can be now used and can be used for converting different reactions. This is the principle. So the organocatalyst principle is also similar to the normal catalysis, that you are reacting 2 different species. You use organocatalyst. Organocatalysis remains free. It doesn't involve in the reaction, and the reaction is done, and you can go ahead and specifically use this particular product without using very drastic conditions. So this is one of the major advantages of organocatalysis, and new carbon-carbon bond formation and carbon heteroatom bond formation can be easily controlled using organocatalysis. So it looks very easy, पर इसके पीछे भी बहुत साइंस है जिसको हम अभी समझने जाएंगे अपने सेकेंड टॉपिक में, which is asymmetry and chirality. तो अगर हमें asymmetric reactions को समझना है तो we have to understand first asymmetry और chirality. Chirality word जो है वो asymmetry को ही describe करता है, और asymmetry का मतलब है कि जिसमें कोई symmetry ना हो, यानी कोई symmetrical plane ना हो. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम इस पार्ट में समझते हैं कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैसे ये मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं. सो इसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस. तो उसका जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है: asymmetric synthesis is a method for preparation of chemical compounds which aims to bias the synthesis in producing one stereoisomer from another stereoisomer. तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्टीरियोआइसोमर बना रहे हो, स्पेसिफिकली दूसरा नहीं बना रहे हो. तो अगर आपको स्टीरियोआइसोमर नहीं पता है पहले, तो फिर आप इसे कैसे समझेंगे? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पहले स्टीरियोआइसोमर के बारे में समझाऊंगा. तो बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी वो स्पेस में डिफर करते हैं, स्पेशली डिफरेंट करते हैं, एंड दे कैन हैव ड्रामेटिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वन अनदर. तो अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम बेसिक्स. तो जैसे हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स which we call as structural isomers, ठीक है, and the other one is the stereoisomers, or we call them spatial isomers. Spatial word comes from space, that means 3 dimensional isomers. और वो जो stereoisomer हैं वो 2 तरह के होते हैं, enantiomers और diastereomers. So let us spend 2-3 minutes for understanding this. तो पहले constitutional isomer कैसे होते हैं? Constitutional isomers have same molecular formula but they differ in sequence in which the individual atoms are bonded. So there are basically 3 types. One is the skeletal isomers, जिसमें कि आपके पास ये skeletal है, एक linear chain है, अगर आप उसे ब्रांच कर दें तो आप कहेंगे उसको skeletal है. आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, आपने इसको skeletal isomer कह दिया. Second type is positional isomers, यानी you have a ortho product like this,
जहां पे ऑर्थो पोजीशंस पे 1-2 पोजीशन पे है, इसको आपने 1-4 पोजीशन पे कर दिया। जैसे आपने नाइट्रो का बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, कार्बन नाइट्रोजन का यहां पे लगा दिया, सो यू हैव नाउ दिस ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। दिस इज पोजीशन, आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। देन देयर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिसमें कि आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे आपके पास अल्कोहल है एक तरफ और दूसरी तरफ ईथर है, आपने दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। तो ये सारे जो होते हैं आइसोमर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर में जैसे हमने बोला कि 3 डायमेंशनली ये डिफरेंट है, दैट मींस इन स्पेस दे आर डिफरेंट, सो दे हैव सेम एटॉमिक कनेक्टिविटी, दैट मींस बॉन्ड्स एक ही तरह के हैं लेकिन स्पेस में वो डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस, ये जो है ये सिस एल्कीन है, दोनों के दोनों मिथाइल एक तरफ लगे हुए हैं, आपने इसके ट्रांस कर दिया, इनकी अटैचमेंट सेम है लेकिन आपके पास टोटली स्पेस में डिफर कर गए। सिमिलरली एक कार्बन एटम है यहाँ पे जिसके चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने की वजह से अगर आपने इसके बीच में एक मिरर लगाया और इसका एक ऑपोजिट कंपाउंड लिया, मिरर कंपाउंड लिया, तो आप देखेंगे ये इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो सकता, यानी ये सेम नहीं बन सकता। तो दैट मींस ये स्पेस में डिफर कर गए। इसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। तो ये समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे इजी वे है, वो हमारा हैंड है। लुक एट माई दिस हैंड विच आई एम शोइंग इन द पिक्चर, और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन में। लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड की मिरर इमेज है। अगर दोनों के बीच में अगर हमने मिरर लगा दिया तो ये वाला जो हैंड है वो दूसरे हैंड पे सुपर इंपोज नहीं हो सकता, यानी दिस हैंड इज नॉट सिमिलर स्पेशली बिकॉज इस हैंड के बीच में एक एसिमेट्री है। अगर मैं हैंड के बीच में एक प्लेन काटूं तो लेफ्ट साइड ऑफ हैंड इज नॉट सिमिलर टू द राइट साइड ऑफ हैंड, सो दैट मींस कि ये एसिमेट्री होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और इसके दोनों प्लेन्स जो हैं डिफरेंट हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, या जिसे कहते हैं कायरलिटी। सो अ मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स कायरलिटी व्हेन इट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो ये हैंड जो है एक तरह से कायरल सिस्टम है, यानी एसिमेट्रिक सिस्टम है। और अगर मैं इसे मॉलिक्यूल्स में समझाने की कोशिश करूं तो लुक एट दिस मॉलिक्यूल हियर, एंड इन दिस मॉलिक्यूल you can see that this black atom, which I am presuming that this is a carbon, and these are 4 different substituents. Now if I take a molecule like this with different substituents, and if I put a mirror image of this substituent mirror here, then I can have this type of atom here. For example, if you see, this is the mirror. So this, presuming that there is a mirror in between these 2 atoms, this would be the mirror image. This will be the mirror image of this molecule, because now these are exactly opposite to each other. But when I try to superimpose this molecule on the other, you will see 2 of them will have the same thing. Yellow will come on yellow, black will come on black, but the red will not come on red. There will be blue here, and similarly the red blue here. So that means this molecule is not the same as this molecule. Although they are mirror images of each other, they are not similar. So this is a big problem in chemistry. Organic chemistry में बहुत ही बड़ी problem है। जब आप कुछ ऐसे reactions करते हैं तो ये दोनों तरह के molecule बन जाते हैं, और आगे जाके हम देखेंगे कि ये दोनों तरह के molecule की biological activity totally different होती है, बिल्कुल ही different होती है। अगले हम कुछ slides में देखेंगे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक चाहिए, और एक बनाने के लिए इट्स अ ह्यूज टास्क। आप जब भी बनाते हैं तो दोनों बन जाते हैं, और आप दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो एसिमेट्रिक रिएक्शंस हैं जिसमें कि सिर्फ एक बन जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर इस दुनिया के लिए, क्योंकि आपको ऐसे मेडिसिन चाहिए जो कि सिर्फ एक एनेंटियोमर से ही आती है, या आपको ऐसे कंपाउंड्स चाहिए एप्लीकेशंस के लिए जो कि सिर्फ एक आइसोमर से आते हैं। लेकिन आप जब दोनों बना देते हो तो उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। तो ये है क्रक्स, जो हम बोलेंगे आगे जाके, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कैसे ये मॉलिक्यूल बनते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों जो मिरर इमेजेस हैं आपस में, इन दोनों को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ये आपस में एनेंटियोमर्स है, ये वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एनेंटियोमर्स।
So that means any molecule which is a mirror image of each other, any two molecules which are mirror images of each other, but they are not superimposable, यानी there is asymmetry there in the molecule. अगर दोनों में से कोई, चारों में से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होता, दो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम होते, तो एक सिमेट्री आ जाती मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से वो सुपर इंपोज कर जाते हैं एक दूसरे, तो वो एनेंटियोमर नहीं होते. तो एनेंटियोमर वो है जो कि सुपर इंपोज ना कर सके, जिसमें एसिमेट्री हो और जो मिरर इमेजेस. सो ये है हमारा डेफिनेशन एनेंटियोमर का. सो दे ऑफन पोजेस डिफरेंट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो सेम कनेक्टिविटी, स्पेस में डिफर कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशंस टोटली डिफरेंट है. And they find very, very important role in pharmaceutical, agrochemical and perfume industry. इसके अलावा भी बहुत सारी applications अब generate हो रही हैं. That is why this science is very, very important. तो वही बात next slide में समझाई है कि जैसे एक left side दूसरे left side का mirror image है, but वो superimpose नहीं कर सकते, same नहीं बन सकते, तो that means they are enantiomer. पर अगर आप एक normal conical flask लो, जो कि एक symmetrical object है, तो आप ना सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स पे, बट एक नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर भी आप एक नॉर्मल सब्सटेंस को भी बोल सकते हैं कायरल एंड कायरल, कि वो कायरल है या नहीं है कायरल. तो ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इसको हम यूज कर सकते हैं. तो एक फ्लास्क के अंदर जैसे यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें अगर हम मिरर लगाएंगे, मिरर इमेज, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएंगे. तो वो जो है वो दोनों मॉलिक्यूल, वो जो है वो ए कायरल मॉलिक्यूल है, यानी वो कायरल नहीं, तो वो एनेंटियोमर नहीं है. तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो देयर इज नो एनेंटियोमेरिज्म और नो स्टीरियोआइसोमेरिज्म. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट मींस एसिमेट्री एंड कायरलिटी both go hand in hand. That is why the topic of this top side is this. Similarly, जैसे आपका ईयर है, लेफ्ट साइड का ईयर और राइट साइड का ईयर अनसिमेट्रिकल है, तो ये कायरल है. बट एक चेयर है, जैसे ये चेयर है, इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ए कायरल ऑब्जेक्ट है. एक फोक है, वो भी ए कायरल है, बिकॉज उसमें भी एक सिमेट्री है, बीच में से बीच वाला पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज है. एक ग्लास है सिंपल, वो भी एक ए कायरल ऑब्जेक्ट है. तो जैसे ये बच्चा है, अगर ये बच्चा अपने आप को शीशे में देखता है, और मान लीजिए दो अलग अलग बच्चे हैं, एंड इन केस वी जस्ट पुट वन चाइल्ड ऑन द अदर, ट्राई टू पुट इट लाइक दैट, लेट्स से दे आर ट्विंस, ऑल्दो ये मिरर में देख रहा है, बट लेट्स से दे आर ट्विंस, then that means exactly putting one on the other without changing the conformation, they are going to be an enantiomer of each other. So chirality or asymmetry is not only limited to chemistry, it is generalized thing, and this is very, very important. As I have told कि we need one of the stereoisomer. तो एक और important point इसमें ये है, what is the difference between chiral molecules and chiral centers? यानी chiral center होना क्या जरूरी है molecule को chiral होने के लिए, यानी asymmetric कार्बन होना जिसके चारों के चारों जो substituents हैं वो different है, क्या वो जरूरी है chiral होने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप इस molecule को देखें, अगर सेकेंड मॉलिक्यूल को देखें, ये वाला कार्बन एटम जो है, अगर आप मेरे इस एरो को देख पा रहे हैं, दिस कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक. एक साइड ब्रोमीन है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड ये दिस कार्बन इज देयर, अनदर साइड दिस कार्बन इज देयर. दिस इज अ कायरल कार्बन. सिमिलरली दिस इज अ कायरल कार्बन. सो दीज आर टू कायरल कार्बन्स, एसिमेट्रिक कार्बन्स, बट देयर इज अ इनहेरेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री देयर. if I put a plane here in between the molecule, the left side is similar to the right side. So although this molecule has two asymmetric carbons, but overall this molecule is symmetric because there is a plane of symmetry. तो important point ये है कि asymmetry होने के लिए, asymmetric molecule होने के लिए, you should have plane of asymmetry. Even if you have a chiral carbon or if you have two chiral carbon in the same direction, that is not important. So that means a molecule with more than one chiral center is achiral if it has plane of symmetry. This line is very, very important. So enantiomers, let's come to this. Enantiomers have identical physical properties. This is very, very important. That means this molecule and this molecule, which are mirror images of each other, they have similar physical properties. Boiling point, melting point, density are similar because connectivity is similar. But what one of the very important point is that if a plane polarized light falls on this molecule, because of asymmetry in this will rotate the plane polarized light in one direction, whereas if it falls on the other one, on this will it will rotate the plane polarized light in exactly the opposite direction.
So that means they have different optical activities. They are optically active and they can rotate the plane polarized light in different ways. Similarly, they have different chemical properties. They will react different chemically because their spatial arrangement is different. And most importantly, इनकी biological properties भी different है, यानी nature में ये कैसे behave करते हैं. अगर एक medicine है, दूसरा एक medicine है, वो different activities show करेगा. तो ये हमें अब एक तरह से हम इसे समराइज कर सकते हैं कि enantiomers are optical isomers which are non-superimposable mirror images and they can be distinguished by their ability to rotate the plane polarized light. एक plane polarized light को left side मोड़ेगा, एक right side मोड़ेगा. जो left side मोड़ेगा उसको हम leviorotatory बोल देंगे, जो right side मोड़ेगा उसको हम dextrorotatory बोल देंगे. Dextro and levio represents right and left. तो यहां से हमें ये पता लग गया और प्लस माइनस साइन हम देते हैं अपनी तरह से, प्लस दे दिया राइट साइड, माइनस दिया जो लेफ्ट साइड. अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसका भी एग्जैक्ट सेम मोल है, इसका भी एग्जैक्ट सेम मोल है सॉल्यूशन के अंदर, तो दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी. उसको हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर. तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है उसमें इक्वल अमाउंट दोनों की प्रेजेंट है, तो वो ओवरऑल ए कायरल हो जाएगा. तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब अगर आपके पास दो स्टीरियो आइसोमर एनांटियोमर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है. और डायस्टीरियोमर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. डायस्टीरियोमर वो आइसोमर होता है जो मिरर इमेज नहीं होता है एक दूसरे की. तो अभी हम डायस्टीरियोमर्स की बात नहीं कर रहे, तो हम इसको ज्यादा नहीं समझेंगे. हमारे लिए ये समझना जरूरी है व्हाट इज एनांटियोमर, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर और कायरलिटी और एसिमेट्री क्या है. अगर आप ये समझ गए, then I can move to the next topic to understand how this Nobel Prize has been discovered. So I hope that you have understood enantiomers, racemic mixture, chirality and asymmetry. तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि और जरूरी समझना जरूरी है कि एनेंशियोप्योर ड्रग्स यानी जो मेडिसिन्स बनती हैं जनरली, अगर उसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो वो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर को ही वो ड्रग फॉर्म में लेके आता है. तो दैट मींस ओनली वन स्पेसिफिक एनेंशियोमर, यानी एक जो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो कि ड्रग की तरह एक्ट करता है, दूसरा नहीं करता. तो मुझे सिर्फ एक ही कंपाउंड चाहिए और एक को ही सिंथेसाइज करना है. सो मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा आर only in one of the many chiral forms. So different enantiomer of the chiral drugs bind differently. तो nature जो है सिर्फ एक ही enantiomer को बनाता है. And one enantiomer of the drug have desired by beneficial effects. इसीलिए मुझे सिर्फ एक enantiomer की synthesis important है. For example, medicine called as ethanbutol, इसका एक enantiomer जो है वो TB को क्योर करता है, ट्यूबरक्लोसिस को, और दूसरा एनेंशियोमर जो है वो ब्लाइंडनेस को करता है, कॉज करता है ब्लाइंडनेस को. तो अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो टीबी तो क्योर हो जाएगी बट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहेंगे. सो दैट मींस इफ यू हैव बोथ द एनेंशियोमर जो कि नॉर्मल सिंथेसिस में होता है, यू कैन हैव साइड इफेक्ट्स इन द फार्मास्यूटिकल ड्रग. लेकिन अगर आप सिर्फ एक एनेंशियोमर जो कि कैटालिसिस यूज करके बना सकते हैं और स्पेसिफिकली ऑर्गेनोकैटालिसिस, तो सिर्फ आप एक ड्रग बना सकते हैं और आप यानी ह्यूमन काइंड का कितना बेनिफिट कर सकते हैं अगर आप वो ड्रग को इजीली बना सकें, और आप कितना उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं, कितना इजी कर सकते हैं. दैट इज वेयर द क्रक्स ऑफ दिस नोबेल प्राइज लाइज. सिमिलरली एक और ड्रग है नेप्रोक्सिन, कि जिसमें कि एक एनेंशियोमर उस ड्रग का आर्थराइटिस पेन को क्योर करता है और दूसरा वाला जो है वो लिवर पॉइजनिंग कॉज कर सकता है. तो दैट अगेन देयर आर साइड इफेक्ट. सो the important thing is to get only one enantiomer in a better way. एक और important example, एक drug है which is called as thalidomide. ये thalidomide tragedy जब हुई थी तब जाके साइंटिस्ट ने समझा था कि why this enantiomer, one enantiomer is important. उससे पहले nobody used to care. दोनों enantiomer बन जाते थे, दोनों को यूज कर लेते थे हम. So this एक जो था, जो S वाला thalidomide था, एक enantiomer, वो इफेक्टिव सेडेटिव यूज होता है, यानी ट्रैंकुलाइजर सॉर्ट ऑफ यूज होता है. और जो दूसरा था वो एक टेराटोजेनिक है, यानी वो डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन करता है, यानी फीटस को डेवलप नहीं होने देता प्रेग्नेंट लेडीज में. तो उसके अंदर उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. तो अगर वो उन्होंने ऐसी ड्रग यूज कर ली जिसमें कि दोनों एनेंशियोमर्स को अलग नहीं किया, दोनों को इकट्ठे ले लिया, तो वो उसकी उस टाइम के लिए ट्रैंकुलाइजर तो वो एक्ट कर गया, लेकिन इन द लॉन्गर रन जब वो बॉडी में रहा
तो उसकी वजह से जो बाद में जो बच्चे पैदा हुए नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आ गए. सो इट हैज ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप एक एनेंटियोमर नहीं समझेंगे, एंड इफ यू डोंट मेक इट इन अ राइट मैनर, देन यू कैन कम इनटू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो यही वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये 1950s में, क्योंकि उस टाइम पे एनेंटियोमर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा जाता था, तो उस टाइम पे से यूज किया गया. एंड इट वाज सीन दैट आफ्टर यूजिंग थैलेडोमाइड, बर्थ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बेबीज विद सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स वाज देयर. एंड फिर दे रियलाइज्ड, scientists realized after this that this is very very important to separate out enantiomer. उसके बाद pharmaceutical industry में एक word chiral switch use करना शुरू किया गया. यानी अब जो भी ड्रग बनती है, जो भी मेडिसिन बनती है केमिकल कंपाउंड से, उसको चेक किया जाता है कि उसके दोनों एनेंटियोमर्स में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका क्या इफेक्ट है. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है कीटामीन का. ये एक ड्रग है जिसका एक फॉर्म एनेंटियोमर एनेस्थेटिक है, दूसरा हेलुसिनोजन है. तो अगर आपको एनेस्थेटिक चाहिए तो सिर्फ एक फॉर्म चाहिए, और अगर आपको हेलुसिनोजन चाहिए तो दूसरा फॉर्म चाहिए. तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, अदरवाइज दोनों इफेक्ट्स आ जाएंगे. सिमिलरली पेंसिलामीन एक एंटी आर्थरेटिक है, एक म्यूटाजेन कॉज करता है. जी, अलग अलग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. सो इसको समझ के द साइंटिस्ट एंड द फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ यूएस एक्चुअली आफ्टर 1950s they realized that enantiomer synthesis, specific enantiomer synthesis is very very important, and there comes the role of catalysis. Catalyst जो है वो एक enantiomer बनाने में हेल्प करता है. तो अब अगर हम ये सब समझ गए तो अब हम asymmetric synthesis समझ सकते हैं. तो अगर मान लो ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, मान लीजिए ये एल्डिहाइड है मेरे पास, ये उसका कार्बन एटम है. तो बाहर से ये साइनाइड मॉलिक्यूल आ रहा है, जैसे ये नाइट्राइल मॉलिक्यूल आ रहा है, ये यहां पे भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है. अगर ये नीचे से करेगा तो एक एनेंटियोमर बनेगा, अगर वो ऊपर से करेगा तो दूसरा एनेंटियोमर बनेगा. तो अगर मैं कैटलिस्ट नहीं डालता हूं तो मेरे पास दोनों एनेंटियोमर बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा और ये दूसरा वाला भी बन जाएगा. और दोनों का जैसे मैंने दिखाया आपको कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी टोटली डिफरेंट है, जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है. तो लेकिन अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम यूज किया हुआ है मैंडेल नाइट्रोलाइस, तो they have specifically made only one enantiomer, and this shows that this is asymmetric synthesis. ऊपर वाली asymmetric synthesis नहीं है, नीचे वाली asymmetric synthesis है, which has lead to one molecule. So अगर दोनों बन जाए तो उसे बोलते हैं racemic synthesis. अगर सिर्फ एक बने जिसमें कि दो टर्म्स आती हैं, एक एनेंशो सिलेक्टिव, यानी एक एनेंटियोमर ज्यादा बन रहा है, दोनों बन रहे हैं लेकिन एक ज्यादा बन रहा है, तो सिलेक्टिविटी है. और एनेंशो स्पेसिफिक भी हो सकता है रिएक्शन, यानी सिर्फ एक ही एनेंटियोमर बन रहा है और उसमें कोई भी दूसरा एनेंटियोमर नहीं बन रहा. तो एनेंशो स्पेसिफिक मींस 100% एनेंशो स्पेसिफिसिटी इज देयर, यानी ओनली वन एनेंटियोमर इज फॉर्म. सो this is the importance of asymmetric synthesis, and here comes for example, this is a reaction where racemic reaction can be done on this ketone, where sodium borohydride actually reduces this ketone to alcohol. तो अगर आप देखें तो अगर कोई भी बेस यूज, कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो दोनों जो है हमारे एनेंटियोमर्स बन गए. लेकिन अगर कैटलिस्ट यूज किया तो एक एनेंटियोमर ज्यादा बना 98% और दूसरा कम बना 2.5, यानी देयर इज एनेंटियोमेरिक एक्सेस ऑफ नियरली 95%. दोनों का माइनस कर दें, 95% एनेंटियोमेरिक एक्सेस में बना. दैट मींस now if I use specific catalyst, I can make specific enantiomers, and these enantiomers can then be applied for different applications. So again this example here where biological example है जिसमें कि एक फिरोमोन है, जो कि फिरोमोन्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल उस स्पीशी का जो है वो जनरेट करता है, जैसे फीमेल मेल के लिए, मेल फीमेल के लिए. तो दोनों एनेंटियोमर बिल्कुल डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस केस में. तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो कि हमें एनेंटियोमर के फॉर्म में चाहिए होती हैं, और ये ड्रग्स की कुछ एग्जांपल हैं जो कि स्पेसिफिक एनेंटियोमर्स होते हैं. तो let's now come to the last topic, which is the development of asymmetric organocatalysis. कैसे ये नोबेल प्राइज बना हमारा, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है. स्लाइड आपको दिखा रही है कि there are milestones of asymmetric catalysis. कैसे 1939 से शुरू होकर 2001 तक अलग अलग स्टेजेस में asymmetric reactions जो हैं improve होते गए. And it was in 2001
when a Nobel Prize was given for the first time for chiral catalyzed hydrogenation reaction, यानी asymmetric hydrogenation reaction के लिए 2001 में 3 साइंटिस्ट को, प्रोफेसर नोल्स, प्रोफेसर नोएरी एंड प्रोफेसर शार्पलेस received a Nobel Prize in 2001. Then in 2005, metal catalysts were recognized. Nobel Prize was given for metathesis. Metathesis reaction वो होते हैं जिसमें कि metal catalysis यूज करके आप 2 हाइड्रोकार्बन को नए हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हो. कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को आप चेंज कर सकते हो. तो ये रिएक्शन जो है metal catalysis was recognized in 2005. Then in 2010 another asymmetric reaction which was metal catalyzed, यानी palladium catalyzed, metal में भी specifically palladium catalyzed cross coupling reaction was recognized for giving Nobel Prize. इसी continuation में in 2021, this year, the next Nobel Prize, this year's Nobel Prize has been given for organocatalysis, asymmetric organocatalysis, यानी organic के जो molecules हैं, metal के बाद next step organic molecules में ये use किया गया. And the Nobel Prize committee specifically said that in addition to metals and enzymes, जैसे हमने starting में समझा, metals और enzymes के addition में these Nobel laureates, this year's Nobel laureates, both Professor Benjamin List and Professor David Macmillan, developed a third type of asymmetric catalysis called as asymmetric organocatalysis. So this has a great impact on pharmaceutical research and has made chemistry much more greener. This was said by the Nobel Committee. So उन्होंने ये Nobel Committee ने ही example दिया कि for example ये S luminin है, ये उसका structure है, इसका enantiomer जो है ये R luminin है. अब इसमें देखिए कितना biological difference है. एक का टेस्ट लेमन टेस्ट होता है S luminin का और दूसरे का ऑरेंज टेस्ट होता है. दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, यानी कनेक्टिविटी सेम है, सिर्फ मिरर इमेजेस हैं. सिर्फ इस कार्बन के ऊपर चेंज है. ये वाला जो बॉन्ड है ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस है एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम अस inside. So there is only difference in the spatial arrangement, but its biological activity changes. And this was a specific slide which was used by the Nobel Prize Committee, in which they described कि किस तरह से ये दोनों different जो compounds हैं ये किस तरह से asymmetric reactions को help कर सकते हैं. And they specifically discussed about metal catalysis, enzymes, and then they said that this new technique which is asymmetric organocatalysis is a much better technique. Yes, I'll just need 2 more minutes. And this is a specific paper of Professor Benjamin List, in which he used proline, a simple amino acid, for doing this asymmetric catalysis. और उन्होंने simple एक aldol reaction, जो कि एक typical organic reaction है, aldol reaction को दिखाया कि कैसे उसका सिर्फ एक enantiomer हम बना सकते हैं proline को use करके. तो उन्होंने एक simple idea. This paper came in 1999. At that time he explained this phenomena and he was able to demonstrate that one enantiomer was forming in higher quantity than the other. And this is the slide which Nobel Prize Committee also used to show this reaction. He showed that there is enamine formation because of this catalyst, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही enantiomer बना. And he specifically said that this is much cheaper method, environmental friendly, and it makes one enantiomer and improves the efficiency. And this is the paper which Professor David Macmillan showed. He showed the Diels-Alder reaction, a typical reaction of organic chemistry, in which he used these oxazolinones, these compounds, in which he actually showed that Diels-Alder reaction can be catalyzed in one enantioselective form. For example, he used this diene and this dienophile, and he showed this type of iminium ion transition state to form a specific cyclic enantiomer, and he was able to demonstrate this selectivity. एक interesting point students के लिए ये है कि प्रोफेसर मैकमिलन जो थे वो पहले मेटल कैटालिसिस पे काम करते थे, तो उन्होंने वो चेंज किया मेटल कैटालिसिस से ऑर्गेनोकैटालिसिस में. तो उन्होंने एग्जैक्टली डिजाइन किया, he designed, this was his metal catalyst, he designed an organocatalyst. So this type of work you can also think of. This is very simple to think, but this idea has generated Nobel Prize. That is the amazing thing about it. And he was able to change the metal catalysis into the more environmental friendly organocatalysis. ये कुछ typical advancements हैं पिछले 20 सालों में जो हुई हैं. For example, आप एक cyclic 8 member ring structure को bicyclic ring में भी convert कर सकते हो बड़े ही efficient way में easily.
ऑर्गेनोकैटालिसिस यूज करके। सिमिलरली नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस जो कि बहुत ही मुश्किल होती है, मल्टी स्टेप होती है, उसके अंदर अगर आप एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस यूज करोगे तो आप उसको बहुत इजी बना सकते हो, स्टेप्स को काफी इजी बना सकते हो। तो दीज आर सम टिपिकल वेरी एडवांस्ड रिएक्शंस जो कि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई वांट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट। सिमिलरली देयर आर सम नेचुरल प्रोडक्ट्स which can be synthesized using these organocatalysis and asymmetric organocatalysis, and these are typical reactions. There are references, you can go through them. And finally, coming to last couple of slides, asymmetric catalysis सबसे important part क्या करती है? That it leads to sustainability. That means it meets the need of the present generation without compromising the needs of the future generation. That we are now using much milder reagents, we are using reagents which are environmental friendly और हमारी और ultimately वो green chemistry की तरफ लेके जाते हैं. That means this technology is much more energy efficient, minimize or preferably eliminates the waste, and it leads to much lesser pollution. So this technique is actually following the green chemistry principle. All the 12 green chemistry principles are being followed. And finally, the next, what is the advancement? This is the advancement. You will see in next few years somebody will take Nobel Prize in photocatalysis. यानी अब लाइट को यूज करके कैटालिसिस किया जा रहा है. फोटोकैटालिसिस मतलब लाइट को यूज करके कैटालिसिस किया जा रहा है और उसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटिंग कंटामिनेंट्स ऑफ इमर्जिंग कंसर्न्स, देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेटल ऑक्साइड बेस्ड फोटोकैटालिसिस को दूर करके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाए, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके अब इसको यूज किया जाए. तो दिस इज एन एडवांसमेंट ऑफ व्हाट Professor List and Professor Macmillan has done, and you will see in coming years next one of the Nobel Prize will go for this type of catalysis. So thank you very much. And yes, a day before yesterday only there was this YouTube link. I will suggest the students to go through this. Both Professor Benjamin List and Professor Macmillan has given a presentation on 8th December which is there on the YouTube. Students can go and understand this. I hope I have made you understand the basic principle behind the asymmetric organocatalysis. Thank you very much. Yes, wonderful, wonderful, Rohit, Dr. Rohit. We all enjoyed it a lot. I am receiving good amount of questions. We would ask you these questions one by one if time permits. Sure. I have one PhD student with me, Mr. Ajit. Mr. Ajit, you can ask your one question now, please. Good morning, sir. Myself Ajit Singh Jhala. I am a PhD student, and I want to ask you a question: that can organic catalyst replace metallic catalyst? Yes, that's a very, very important question. Actually, to be very honest, the metallic catalyst cannot be replaced immediately, and they have a very, very important usage in different reactions. But yes, slowly some of the reactions have been changed from metal catalysis to organocatalysis. So ultimately you will see as more advancement comes in, the organocatalyst will be more important and metal catalyst will take up back seat, because metal catalysis are not that easy to remove from the environment. It uses they are much more costlier, but at the present moment it is not that easy to replace completely metal catalysis. So they have an important role, but future is for techniques like organocatalysis or asymmetric catalysis. Yes, Dr. Rohit, it's very true. It's, I mean, everything has its own place in the scientific arena as well. So Dr. Sunita Farakia is also having some question from your studio for you. So Dr. Farakia, please, you may ask. Yes. Yeah. So Dr. Rohit, you have very nicely presented about the asymmetric catalysts, and you have very nicely, I mean, I would say that used a very good pedagogy for make our viewers understand what the enantiomers are. So I just want to know, do the enantiomers produce during the biological or natural reactions, and how do they be used in these natural reactions? Again, a very, very important question, and very very important for students to understand. So what happens in nature is that nature has specific catalysts. As we discussed, they have enzymes.
So whenever a nature produces of one particular enantiomer, the enzymes help it to produce only one enantiomer. So nature does its work. So nature only produces one enantiomer, but we don't have access to those enzymes because those enzymes are naturally produced in our body, and it is very difficult to make those enzymes because they are very complex molecules. Those enzymes generally are proteins which are very, very complex molecules, and it is difficult to synthesize the bigger molecules. So that is the problem, that whatever we do in the lab, if we don't use any type of catalysis, we will end up in a racemic mixture. We'll end up in getting both the enantiomers. So there comes the role of making these type of new catalysis, first the metal catalysis and now the organocatalysis, and people are now moving towards making typical enzyme type molecules. So we are learning from the nature. I mean, I will suggest to the students that this, the word research means research. That means it has already been done and this is being we are just redoing it. So nature has already given us a pathway. We are trying to follow nature in that perspective. So absolutely a wonderful question, that nature does this thing in one way, but we don't have the means, or we cannot do that. So we are trying to learn in a very small steps in manner to understand this. Thank so you. yes, this can be now done, but at a very smaller scale. Dr. Rohit, I have many questions, but now we are already running with late time. I will wind up this session today. Yes, Dr. Rohit, very pertinently you have explained the uses of these enantiomers in medicine. The similar kind of uses lie in environment, in green environment, etc., etc. Yes, Dil Mage More. This works here also. So what Ajit started speaking about, the replacement of metallic catalyst with the organic catalyst, we may look for an universal catalysts as we have universal indicators or universal solvents. So we look forward a day when we can have some universal catalyst as well. I don't know how it will be synthesized or how it will, whether it will be man-made or it is already existing in nature. We have to discover it. Very nicely explained the meaning of research, rediscovery, etc. We really loved hearing you, Dr. Rohit Sharma. We would like to listen to you again and again, either on this forum or some other forums of National Council. Thank you very much once again. We thank Department of Chemistry of Panjab University as well as SPSTI of Chandigarh of having introduced us to you. Dr. Thank you, sir. Thank you, and I thank one of my postdocs, Maitri, who has helped me in making these slides. So thank you very much to Mr. Gagan and Ma'am Sunita for having me here. Thank you very much. Thank you, Maitri, on our behalf too. So friends, colleagues, viewers, next we come to you on every Friday, almost on every Friday. Next Friday, that is on 17th of December, we are coming back to you with another interesting topic on wildlife conservation with Dr. Ravin Singh Bhadoria from Lucknow. So he will be with us on 17th of December at 10 a.m. Thank you very much. Till then, take care, be safe. Namaskar.